हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और आज आपका इंग्लिश टाइपिंग सीखने का डे 5 है, यानी कि 5वां दिन है। दोस्तों, डे 1 से लेकर डे 5 डे 4 तक जो है हमने अमरो सीख चुके हैं, अफर सीख चुके हैं और आज जो है दोस्तों डे 5 है। और डे 5 में हमें करना क्या है? डे 5 में दोस्तों मैं आपको कुछ वर्ड बताना चाहता हूँ। उन वर्ड पर प्रैक्टिस करनी है और उन वर्ड पर प्रैक्टिस करने की बाद आपकी जो होम रो है, अफर रो है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो वर्ड क्या है मैं आपको बताऊंगा और साथ ही जो है आप नोट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री, पी, सा, ट्राई, हिट, राइट, रेट, हेट, डिड, किड, ऑयल, pot, eat, taste, sight, feel, pet, R, out, out, arc, life, pity, sad, tail, trail, easy, right, wet, large, large, wood, अर्ली। तो ये वर्ड है दोस्तों, आप जो है इन पर प्रैक्टिस करनी है और उन पर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो होम रो है, अफर रो है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आपको कहीं भी जो है दिक्कत नहीं आएंगी। अब करना क्या है? फ्री से लेकर अर्ली तक आपको जो है आपको करना है, यानी कि फ्री से लेकर अर्ली तक आपको एक सेट हो गया है और इसी तरह जो है आपको कम से कम 8 सेट को करनी है। और फ्री से लेकर अर्ली तक जो है आपने बढ़ाना है और इसी तरह 8 सेट को करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डाउन रो के यूजेस के बारे में बताऊंगा और आपको जो है आज जो है फ्री से लेकर अर्ली तक आपको कम से कम 8 सेट को करनी है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे 6 की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस।